Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all doing great and staying in homes. I am English teacher of class 9th from Trends High School. As you know, in the previous lecture, we have already started Unit 3, Media and its Impact. This chapter is in the form of conversation between teacher and students. Now let us start. Student 4. Can we say that the world is just a click away? तालिब इल्म 4. क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है? Teacher. Maybe. Well. Would any other student would like to say something on it? Miss Aisha pointed to the student sitting at the end. Miss Aisha ने आखिर में बैठे हुए तालिब इल्म की तरफ इशारा करते हुए पूछा. Student 5. Madam, in my opinion, media plays a very constructive role in the society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. तालिब इल्म 5. मैडम, मेरे ख़्याल में मीडिया माशरे के लिए एक बहुत तामीराती किरदार अदा करता है. ये बहुत से समाजी मसाइल जैसा कि बदनवानी, दहशतगर्दी, मंशियात की लत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के बारे में बेदारी पैदा करता है. टीचर. येस, यू आर राइट. हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है. Student 6. Media has also become a mouthpiece of the downtrodden. तालिब इल्म 6. मीडिया मज़लूमों के मुंह की आवाज़ भी बन गया है. Teacher. Yes, well said. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of society. Through debates, reports and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. That is why media has become an integral part of our lives. Now, I would invite one of you to sum up the discussion. जी हाँ, दुरुस्त कहा. ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया एक बहुत ही चौकस इदारा है जो कि माशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है. इसने बहस, रिपोर्ट और टॉक शोज़ के ज़रिए हर फ़र्द को जो वाहिद और ज़िम्मेदार बना रखा है. यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. अब मैं आप में से किसी एक को दावत देती हूँ कि वो आकर बहस को समेटें. Student 1. I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. तालिब इल्म 1. इस बहस को नतीजा खेज़ बनाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि मीडिया अगर ईमानदारी से काम करे तो वो एक मस्बत किरदार और इस्लाही असरात मुरतब कर सकता है. टीचर. गुड कंक्लूजन. आई एम हैप्पी दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल. टीचर. अच्छा इख्तिताम. मुझे खुशी है कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया और अपना नुक्ता नज़र अच्छे अंदाज से पेश किया. द बेल रिंग्स. मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स. घंटी बजती है और मिस आयशा जमात को खुदा हाफिज़ कहते हुए चली जाती हैं. After that, on the very similar page, we have the theme. The theme of the unit is to highlight the role and impact of media. It tells that media can mold the opinion and mindset of people. It has a deep impact on the lives of people. Media has turned on the world into global village. So students, in this chapter, you learn the role and the impact of media. Also the fact that how strongly media affects our society and mindset of our people. So the lesson that we get from this chapter is media, if used properly and in the right way, can affect the life of people in a very positive manner. It can become a mouthpiece for the downtrodden and the poor people. But like every other thing, media also has its pros and cons that should be kept in mind. Like every institution, media should also be held accountable for the reports and the news it publishes. You have to also keep in mind the major means of communications of these days and how they can empower and demotivate a society. Here I have a homework for you. What you have to do is you have to think about the negative aspects of media and write a summary about it.